can't say no to people. एंड इफ़ यू ट्राई टू मेक एवरी वन कम्फर्टेबल अराउंड यू, चाहे तुम कंफर्टेबल हो या ना हो, एंड तुम्हें हमेशा लगता है कि अगर उसने मुझे जज कर दिया या फिर अगर वो बोल रहा है कि मैं अच्छी नहीं हुई, इट मीन्स मैं अच्छी नहीं हुई, या फिर उसको लगता है दैट आई एम नॉट अ फन पर्सन, दैट आई एम नॉट अ फन पर्सन, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, you are a people pleaser. Yes, you heard me right. You are a people pleaser because you have these traits. And since I said that you, congratulations, it doesn't mean that I'm really happy for that. It doesn't work that way. It means तुमने खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया है एंड तुम खुद को अभी से बर्बाद करने लग गए हो. बिकॉज येस, पीपल प्लीजिंग इज अ बीमारी, इज अ लाइक दीमक जो तुम्हें अंदर ही अंदर खा जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. According to Sakshi Tripathi, people pleasers are those person who sacrifice themselves for others. Yes, अपनी खुशियों का त्याग देना, मतलब वो महानता की मूर्त बनना, अपनी खुशियों का त्याग देना ताकि दूसरे खुश रहो. तुम भले कंफर्टेबल रहो या ना रहो, पर तुम्हारे साथ में जो है दे शुड बी वेरी कंफर्टेबल अराउंड यू. चाहे तुम क्यों ही दम घुट के मर रहे हो, बट तुम बोलोगे भी नहीं बिकॉज यू वांट टू प्लीज देम. So just let's start and let me tell you what people pleasing is all about. I have always been a people pleaser in my life. Like always. मैं बचपन से ही मुझे लगता है मैं people pleaser थी. एंड मुझसे भी बड़ी people pleaser है मेरी बहन, तो वो भी बड़ी बहन. तो एक्चुअली मुझे लगता है कि पीपल प्लीजिंग की थिंग ना मेरे डीएनए में चली आ रही है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी वैसे हैं. हम खुद ही मर रहे होंगे अंदर, हम खुद ही अनकंफर्टेबल फील करेंगे, बट हम किसी को ना नहीं बोल सकते. चाहे वो कुछ भी कर ले, हम भले खुद को कितना भी प्रिपेयर कर लेंगे कि नहीं उसने हमारे साथ बुरा किया, नहीं उसने साथ हमारे साथ अच्छा नहीं किया, लास्ट टाइम व्हेन आई नीडेड हिम और हर दे वर नॉट विद अस, तो इस बार हम नहीं करेंगे. बट व्हेनेवर समवन आस्क्स फॉर समथिंग, यस, चाहे मैं पूरे दिन क्यों ना बिजी हूँ, चाहे मुझे 100 काम पड़े हो, बट समवन आस्क्स मी कि साक्षी मेरा ये काम कर दे, आई वाज लाइक यस ऑफ कोर्स मैं कर दूंगी ना. हाँ भाई, मैं इसलिए तो जिंदा हूँ. इट वाज लाइक दैट. एंड मेरी बड़ी बहन भी वैसी है कि हम लोग बहुत स्ट्रगल कर लेंगे, बट हम दूसरों को कुछ नहीं बोलेंगे. एंड बिकॉज वी फील ऑकवर्ड इन दैट. हमने बचपन से यही किया, तो वी फील कि हम ना कैसे बोले, हम ना नहीं बोल सकते, बिकॉज हमें ऐसे बचपन से सिखाया गया कि दैट वी हैव टू फिट इन द सोसाइटी. तो हमें स्टार्टिंग से ये है, हमारे अंदर ये चीज़ बनी हुई है कि वी हैव टू प्लीज पीपल, वी हैव टू मेक देम कंफर्टेबल एंड हैप्पी. हमारी एक इमेज मेंटेन करके रखनी है, एंड ऑल ऑफ आवर लाइफ वी हैव डन दैट. बट एक्चुअली क्या हुआ, कुछ नहीं. वेदर आई फेल्ट कंफर्टेबल और नॉट, आई ऑलवेज ट्राई टू ब्लेंड इन द क्राउड. लाइक ऐसे मुझे था कि मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत लोग हैं, एंड इफ समवन इज फेसिंग सम प्रॉब्लम, समवन इज शोइंग यू नो साइंस ऑफ सैडनेस और डिप्रेशन, देन आई हैव टू बी विद देम. भले उन्होंने मेरे साथ कितना भी बुरा किया, बट इट्स ओके, आई एम फ्रेंड, एंड मुझे तो अपना जो मेरा काम है वो करना चाहिए ना. एज अ फ्रेंड आई शुड बी देयर विद हर और हिम, चाहे उन्होंने मेरे लिए कितना ही कभी स्टैंड ना लिया हो, कितना ही बुरा किया हो, इनफैक्ट बैड बिचिंग किया हो, बट नो, आई एम द फ्रेंड एंड आई शुड बी विद देम. But it doesn't work that way. We have to understand it doesn't work in that way. Actually, there are several signs of people pleaser. तो सबसे बड़ा एक साइन है कि हम किसी को ना नहीं बोल सकते. Yes, people pleaser can't say no to anyone, even if you're suffering. Second sign is that कि you always try to make people comfortable around you. Second sign is that you always try to make people comfortable around you, even if you are not comfortable with them. यस, हम चाहे हमें सफोकेशन फील हो रहा है, हमें हो कि नहीं हम इस जगह पे नहीं जा सकते, ओ माय गॉड ये कैसी बातें कर रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बट हम ये चीज़ नहीं बोलेंगे बिकॉज यस वी आर पीपल प्लीजर, वी कांट स्टैंड फॉर आवरसेल्फ. क्योंकि अगर उसको बुरा लग रहा है, तो यार अगर मैंने बोल दिया कि दैट आई डोंट लाइक हर, और यार अगर मैंने बोल दिया कि दैट आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल हियर, तो वो क्या सोचेगी, उसको क्या लगेगा. अगर वो हर्ट हो गई तो भले हम हर्ट हो, ये चलेगा हमारे लिए. एंड थर्ड साइन इज दैट वी सेक्रीफाइस आवरसेल्फ फॉर अदर्स. यस, हम अपना काम छोड़ देंगे, हम खुद को, वी ऑलवेज ट्राई टू मेक हम दूसरों को प्रायोरिटी देते हैं, खुद को नहीं. एंड दैट इज नॉट राइट, दैट इज नॉट सिंपली राइट थिंग, बिकॉज हम दूसरों को प्रायोरिटी ट्रीट करते हैं व्हेन वी शुड बी द वन इन आवर प्रायोरिटी लिस्ट. फर्स्ट मीन्स वी शुड बी द फर्स्ट इन आवर प्रायोरिटी लिस्ट, बट हम ऐसा नहीं करते बिकॉज यस वी आर पीपल प्लीजर. एंड नेक्स्ट साइन ऑफ पीपल प्लीजर आर वी जज आवरसेल्व्स अकॉर्डिंग टू लोग क्या सोचते हैं. Yes, not everyone or the लोग that I am talking about, but अगर किसी ने बोला that I am not enjoyable person, that उनको मेरे साथ रह के मज़ा नहीं आया, then I think oh shit, maybe वो सही कह रहे हैं, maybe I'm boring person, maybe I'm not that fun person that I should be. Oh my god, मुझे ठीक करना पड़ेगा. और अगर किसी ने बोल दिया कि that I am not a good person, I am evil, तो मैं सोचूंगी yes, मैंने क्या पता कुछ ऐसा कर दिया होगा, क्या पता इसके अकॉर्डिंग वो मुझे ऐसा बोल रहे हैं, ओ माय गॉड आई मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग. बट ऐसा नहीं है, एंड वी शुड स्टॉप डूइंग दीज थिंग्स. ऑलवेज ट्राई टू मेक अदर पीपल थिंक गुड अबाउट अस, कि कहीं उनको ऐसा ना लगे कि हम ऐसे हैं या वैसे हैं, ये है वो है. इसीलिए हम कुछ भी करेंगे, हम उनका काम करेंगे, हम उनकी बातें मानेंगे, वी विल बी देयर फॉर देम, ताकि वो बोले कि हम अच्छे हैं. बट इट डजंट हैपन दैट वे. आई थिंक इन ऑर्डर टू रिसीव लव वी हैव टू गिव लव, एंड वी हैव टू गिव मोर लव. तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम ना बहुत ज़्यादा चीज़ें करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें करते हैं दूसरों के लिए, ताकि वो हमें सेम रिस्पेक्ट और लव रेसिप्रोकेट करे. बट ऐसा नहीं होता है. एंड वी आर पीपल प्लीजर, पीपल टेक अस फॉर ग्रांटेड. यस, पीपल टेक अस फॉर ग्रांटेड. दे थिंक कि ये बंदा तो हमेशा काम कर ही रहा है, कि ये तो रहेगा, ये तो रहेगी, बिकॉज शी ऑलवेज स्टेज. नो मैटर व्हाट आई डू, नो मैटर हाउ मच आई इग्नोर हर, और नो मैटर मैं इसके साथ कितना भी बुरा करूँ, शी विल स्टे. दैट्स वाई वी आर ऑल अलोन एट द एंड.
We are there for the people. हम उन लोगों के पास रहते हैं when they need us, whenever they are sad, whenever they need us, whenever they need comfort, love or help. We are there for them. That yes, we are here. You can share the things, you can tell us everything that you want, but when we need them, no one is there. पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ, एंड नॉट जस्ट मी, बिकॉज मैंने कुछ अपने जैसे लोगों से बात किया था कुछ टाइम पहले, एंड दे आर सेम लाइक दैट कि व्हेन आई सफर व्हाई आई एम ऑल अलोन. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कि मैंने तो इतना किया था लोगों के लिए, मैं तो सबके पास थी, मैं तो सबके लिए थी. देन व्हेन जब मेरी टर्न आई कि लोगों को मेरे साथ वैसा सीन करना चाहिए था, मेरे साथ रहना चाहिए था, व्हेन आई वाज सफरिंग, आई वाज इन पेन, कोई नहीं था. बिकॉज ब्रो, यू आर नॉट अ गुड फ्रेंड, यू आर अ पीपल प्लीजर. तुमने वो साइंस, तुमने वो अर्ली साइंस नहीं देखी जो तुमको देखनी चाहिए था. नाउ यू आर रिग्रेटिंग दोज थिंग्स. What people pleasers are big impact. You know what who impact is, who understands everyone's pain. तो जब पता है लोग, मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि जब when people hurt us और हमें सही ट्रीट नहीं करते हैं, तो ना हम ऐसे they are like, oh they must be, they are suffering mentally, they are not very stable emotionally, that's why they are doing. और उसके बाद अगर हम नहीं भी सोचते तो हमें बहुत गंदा ट्रीट कर देते हैं. ऐसा एक्चुअली मेरी बहन के साथ हुआ था, बहुत बार हुआ था, लाइक बहुत बहुत बार हुआ था. तो एक्चुअली क्या होता है कि दे हर्ट अस and they are, and after some time they come and say, oh I'm sorry, I was so unstable that time, that's why I did and said those things. But ऐसा नहीं चलता है. Just because you are suffering, you are not very well, it doesn't mean you will hurt people. Your emotional instability and your mental instability does not justify how you treat others. It does not give you power to hurt others. Your actions are in your control. You have to understand this. Just because I am hurt, it doesn't give me power to hurt others. और फिर मैं बाद में बोलूँ, oh sorry, I was hurt. और मतलब मोस्टली तो लोग सॉरी भी नहीं बोलते कि यार एक्चुअली वो जो हुआ था, जो मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया था, वो मैंने इसलिए किया था because I was not feeling good, and I hope you understand this. No, I won't understand. Why should I always be the one who is understanding, who is just giving, and you're just receiving? And no, you are giving disrespect. It is, it hurts actually. The people pleasers are hurt at the end. I have been hurt a lot of times, but क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं गलत कहाँ पे हूँ. And मैं गलत क्या कर रही हूँ? I am always with the people, then why I am alone at the end? Because I was repeating the same mistakes again and again. That's why the results were same. I thought मैं अच्छी friend हूँ, but no, I was a people pleaser. And मेरी बहन को भी यही लगा था कि that she's a good person, but no, she was people pleaser. And just like you also think that you are a good person and you are doing everything good, you are doing good for your friends and family and classmates, whatever, but you are just people pleasing. And at the end you will be end up like me with a lot of lessons. So I don't want you to end up like me. Really. Matlab, if you can stop yourself, if you are seeing the signs, then bro, just stop it. It is high time you have to stop yourself from doing these kind of shits and just get your power back to yourself, get your energy back to yourself. You are not born to just give. You are born to be loved. You are born to be respected. Why are you letting someone else disrespect you and make fun of your efforts? No, it's not. जो हम, the fact is, the people pleasers जो हम लोग ज़्यादा करते हैं ना दूसरों के लिए, if we stop doing for them and if we start giving the same attention, priority and love to ourselves, we will actually grow. Okay, now it's time to say how can you stop being a people pleaser and you can get back to being yourself. Yes, so the first जो हमने साइन के बारे में बोला था, no नहीं, we don't say no, then bro, try to learn no. And I have seen a lot of videos. I have seen like यही काम तो करती हूँ मैं, videos देखना. तो just kidding. तो like I've seen a lot of videos जिसमें लोग बोलते हैं कि do this, ये करो, वो करो, and we do that, but we are unsatisfied with the results. So let me tell you, कुछ भी ना ऐसे नहीं होता. It takes time. It takes, it is like a process. तुम्हें overnight result नहीं मिलेगा. तो when I say this, you should stop being people pleaser. ऐसे no, मैं कल ही नहीं बनूँगी, मैं कल से ऐसे लगी, no, नहीं होगा. क्योंकि मैंने तो किया था, फिर I'm not getting result and I'm doing this or that because it takes time. It is a process. So first you should start saying big, बड़ा वाला ना, whether big no, बड़ा वाला ना, whether you like it or not. You have to say it. If you think that वो जब तुम्हारे सही नहीं है and you don't want to go, if you think that you have a lot of things on your plate, so you can't go another person and say no. Tell them you can't do this. Have your boundaries. Create your boundaries, and don't let anyone cross them. Just make it a rule. Again, if you don't have freedom, you don't have that big sum of amount of money to go somewhere, just say no, you can't do that. And let me tell you, you don't have to explain yourself. Not every time. If you're saying no, you don't have to give excuses. Actually, क्या है ना कि मैंने बहुत काम कर रही थी, तो मुझे नहीं लगता that अभी मैं कुछ कर पाऊंगी. Or you don't have to console them. If they are just telling you to do their work, just say no, I can't do that, I don't have it. No more than this. A basic belief, one time explanation is enough, and if they need more or they want more, and if you think you need to explain yourself in one or more than one way, then bro, stop it. This is also a sign. This is a sign that is telling you to stop. So you don't have to explain yourself for every decision you're taking. A no is no, and that is enough. You don't have to explain it. You don't have to explain yourself to everyone. Not all people deserve it. Some people deserve it. Yeah, some people deserve it or very close to you. But they also don't deserve an explanation of all of your actions. So don't try to over-explain yourself. Next, you have to start learning solitude.
I know कि बहुत सारे लोग हैं आपको बोला कि love yourself, love solitude, love this, love that, love this. It is not easy. You know, I was also the same because I am a very extrovert person. I like talking very much. And I feel like I need a person जिसके साथ मैं चीज़ें बता सकूँ कि ओ तुझे पता है ये बोला वगैरह. I thought I was that person, but I'm not because I am changing. And मेरी क्वेश्चन पहले ये हालत है so I don't have anyone. My God, but you know, eventually you will start learning your own company. ये ना ऐसे snap of fingers में नहीं हो जाएगा. तुम्हें बहुत बुरा लगेगा. तुम रोगे, तुम्हें lonely feel होगा. But you know you will get used to that thing. And फिर उसके बाद phase आएगा you will start learning that. So I'm not telling you that just go there, just sit alone and you will feel like oh my God, I am enjoying my solitude. It doesn't happen that way. You will hate it. You will cry for that. People like me, I'm talking about some introverts actually like that. And there was a time in my life I was like, I should be introvert. Why am I extrovert? Introvert life is so easy and it's so good, it's so peaceful. Then why am I extrovert? And believe me when I say this, that I have tried to change that. I tried to change that thing, but no, because being extrovert is my core personality. I was born in this personality, Bona, and being the cheerful one, energetic one, so I can't change that thing. So I stopped changing anything. And you know what? Although when I used to, and I am an overshare also. That's why I'm saying that I love my solitude. So let's get back to the topic. When I say you will hate it, because I also hated business starting, and I like wished I would have someone to talk to, and I cried for that. But then I learned that it's okay. I can have myself. I can love myself. I can talk to myself. So whenever I used to have so many thoughts that close in my mind, I used to take a notebook and I write it down. Or when I couldn't do this in the public places or something, I used to take my phone out and I will open the Google Notes. I will record it because yes, I have to speak it. So I will either record it or I will type it so the thought goes back in my mind or it just vanishes from my mind. So I just process that process. This is why this is my process. This was my process of dealing with the loneliness. You can have your own process or you can have other things that will make you feel less lonely. And you know, first you will hate it. Let me explain this. First you will hate it. Then second you will try to find the coping methods by which you can feel less lonely, and then you will just start loving. So remember the process and trust the process. You will love it. You will love your solitude. You will love yourself. You have to love yourself. That's a basic topic. Now we'll make a different. There are several things that you can do instead of being people pleaser. You know, we do because we need people, but when we start to love ourselves, to accept ourselves the way we are, then we are realizing we don't need to please people and we don't need to be dependent on people anymore because we have ourselves. So this is a process. You don't have to give up just because it is a process. It will take time, but you will reach there. Okay, सीढ़ी है ना, you have to take first, फिर second, फिर third and fourth. Okay, अब बोलोगे that we jump it, तो तुम jump ही करोगे तो एक के ऊपर एक करोगे ना. तो ऐसे step by step you will learn it. I learned it. Thanks को सब कुछ सिखा देता है. But I am telling you now, if you are seeing sign of being a people pleaser, then please stop it. Otherwise you will get hurt. And वो hurt इतना भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है, बहुत बड़ा वाला टॉपिक ना, you will start eating yourself. See the sign. Stop being a people pleaser now, please. Because you won't be happy. You won't be happy after that. As we have to protect ourselves because there is no one else who is going to do that for us. We have to take care of ourselves. We have to love ourselves. We have to protect ourselves from the energies that are disturbing our mental peace. I am very happy that in my life I am at very peace right now, and I love this. You know, peace, no drama life. You should also do this because you know I am just protecting my energy from everywhere else. I am not giving my energy. मैं अपना टाइम किसी को एक्सप्लेन करने में नहीं लगा रही हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया. मैं किसी को प्लीज करने में नहीं लगा रही हूँ. मैं अपने आप को और नो किसी की जस्ट आई एम नॉट ट्राइंग टू फिट इन. दैट्स व्हाई आई लव इट. I'm just focusing on myself. So yes, and yes, you should stop pleasing people and you should start working on yourself. Because जितना एफर्ट्स तुम उनको देते हो उतने एफर्ट्स अगर तुम खुद को दोगे तो you will grow and you will love it. So please stop being a people pleaser for yourself, for me, and for everyone else. First of all, yourself. So this was all that I wanted to say about people pleasing and ways you can reduce it. If you like the video, like, please. And if you want to stay connected and you want to listen more of my so you can just stay tuned to my channel and subscribe it. Thank you.